ध्यान के उपरांत एक बार फिर से स्वागत। और आगे विनय पिटक का जो हिस्सा है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। भंते जी ने जो मुझे भेजा था उसमें हमने पिछली बार जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे हम पढ़ेंगे। भंते जी, जो परमिशन। हाँ, सो वी कैन जस्ट रिकलेक्ट कि ये एक काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है जो कई बार आप टीचर से सुनेंगे। तो अभी तक हम उसके आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। एक काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है वो भगवान बुद्ध के पास गया है, इंक्लूडिंग दिस पर्सन जिनको सोन कहते हैं। और आई थिंक जो किंग हैं ही हैज़ बिकम सोतापन्न, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर नाउ। और इसमें द इशू इज कि ये जो सोन है वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजों से पाले गए हैं। तो वो जब मंक बनेंगे फिर आगे चल के क्या होगा, दैट विल डिटरमिन द contours of the story. So just to remind everybody of that background. Okay, okay, Nikhil, carry on, please. Yeah, okay. सोणस्य पवच्च अथ को सोणस्य कोलिविश्यस्य एतद्होषि यथा यथा को अहं भगवता धम्मं देशितं आजानामि नैदं शुक्रं अगारं अच्छावसता एकन्त परिपूर्णं एकन्त परिशुद्धं संखलिखितं ब्रह्मचर्यं चरितुं यन्नूनाहं केशमस्सुं ओहारयित्वा काषायानि वत्थानि आच्छादयित्वा अगारस्मा अनगार्यं पव्यजेयन्ति अतिकोतानि अशीति गामिकसहस्राणि भगवतो भासितम् अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उत्थाय सना भगवन्तम् अभिवादयित्वा प्रदक्षिणं कृत्वा पक्रमिंसु अतिको सोणो कोलिविशो अचिरपक्कन्तेषु तेषु अशीतिया गामिकसहस्रेषु येन भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निस्सिन्नोखो सोणो कोलिविशो भगवन्तम् एतद्वोच यथा यथाहं भन्ते भगवता धम्मं देशितं आजानामि नैदं सुकरं अगारं अध्यावसता एकन्त परिपूर्णं एकन्त परिशुद्धं संखलिखितं ब्रह्मचर्यं चरन्तु इच्छामहं भन्ते केशमस्सुं ओहारयित्वा काषायानि वत्थानि आच्छादयित्वा अगारस्मा अनगार्यं पब्बाजेतुमं भन्ते भगवाति अरथको सोणो कोलिविशो भगवतो सन्तिके पवज्जं अलथ उपसंपदं अच्छी रूप निखिल, संपन्नो। यहाँ यहाँ रुक सकते हो आप, यहाँ रुक सकते हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सक्षम, वुड यू लाइक टू डू दैट? Yeah, I will take it up. Thank you. Am I audible? यस।
Thank you. The going forth of Sona Kolivisa. But Sona thought, the way I understand the Buddha's teaching, it's not easy for one who lives at home to lead the spiritual life perfectly complete and pure as a polished conch shell. Why don't I cut off my hair and beard, put on the ochre robes, and go forth into homelessness? When those 84,000 chiefs had rejoiced and expressed their appreciation for the Buddha's teaching, they got up from their seats, bowed down, circumambulated the Buddha with their right sides toward him, and left. Soon after they had left, Sona approached the Buddha, bowed, sat down, and said, Sir, the way I understand the Buddha's teaching, it's not easy for one who lives at home to lead the spiritual life perfectly complete and pure as a polished conch shell. I want to cut off my hair and beard, put on the ochre robes, and go forth into homelessness. Please give me the going forth. Sona received the going forth and full ordination in the Buddha's presence. कहाँ तक पढ़ना है ये? Yeah, that's it. That's it. That's it. Also, Saksham, I think आप थे शायद उस दिन या नहीं थे. What we were also practicing was to जो हम जब रोमन में पाली लिखते हैं ना, तो उसको हम ये भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि उसको हम कोशिश करें कि जो सही तरीका है वैसे बोलें. So this would be son, because it's not na, sona, it's not sona yet. And I think you know that already, Okay. है ना? So we'll also practice that. So And Kolivisa? ल के नीचे, एल के नीचे वो डॉट है थोड़ा सा, so it becomes ल ल like the Marathi ल. Kolvish. Vissa, Vissa, Kold Vissa. Yeah, Dharsab, please go ahead and supply anything else that you think is necessary. Son तो clear है, तो कोली विस्सा है उसका. It is so normally people pronounce it as la only, but it's la and da together, as you Yeah, said. yeah. In Maharashtra, I think there is a word Marathi language. If I'm not mistaken, it's Kolavisa. Kolavisa. Yeah. Kolavisa. Thank you. So I'll read further. अचिरूप संपन्नो चापनायस्मा सोनो शीतवने विहरति तस्य अच्छारद्वीर्यस्य चङ्कमतोपादाभिञ्जिन्सु चङ्कमो लोहितेन फुटो होति संयथापि गवा घातनम् अतिको आयस्मतो शोणस्य रहोगतस्य पटिशल्लीनस्य एवं चेतसो परिवृत्तको उदपादि ये को केचि भगवतो सावका आरद्धवीर्या विहरन्ति अहं तेषं अन्यतरो अथ च पन्मे नानुपादाय आसवे हि चित्तं विमुच्यति स विज्जन्ति खोपन्मे कुले भोगा सक्का भोगे च भुञ्जितुं पुण्यानि च कातुं यन्नुनाहं हीना यावतीत्वा भोगे च भुञ्जेयं पुण्यानि च करयन्ति अतिखो भगवा आयस्मतो सोणस्य चेतसा चेतो परिवितक्कमय्याय संयथापि नाम बलवा पुरुषो समिञ्जतं वाहं पसारेय पसारितं वाहं समिञ्जय्य एवमेव गिज्जकूटे पब्बते अन्तर्हितो शीतवने पातुर्होषि
अतिको भगवा बहुले हि भिक्खुहि सद्धिं सेनासञ्चारिकं आहिन्दन्तो येनायस्मतो सोणस्य चङ्कमो तेन उपसङ्कमी अदस्साखो भगवा आयस्मतो सोणस्य चङ्कमं लोहितेन फुटं ऋष्वान् भिक्खुवामन्तेषि कस्य न्वाह कस्न्वायं भिक्खवे चङ्कमो लोहितेन फुटो संयथापि गवाघातनन्ति कस्य न्वाहं भिक्खवे चङ्कमो लोहितेन फुटो संयथापि गवाघातनन्ति आयस्मतो भन्ते सोणस्य अच्छार्ध वीर्यस्य चङ्कमतोपादाभिञ्जिन्सु तत्सायं चङ्कमो लोहितेन पुटो संयथापि गवाघातनन्ति ओके अतको ओके ओके निखिल, ओके ओके। वो हम उस छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हैं ना, जिससे कि वी कैन फॉलो व्हाट हैपेंस। हाँ। Soon after his ordination, while staying in cool groves, Venerable Sword practiced walking meditation with so much energy that his feet cracked. His walking path became covered in blood, like a slaughterhouse. Then, while reflecting in private, he thought, I am one of the Buddha's energetic disciples. Yet my mind isn't freed from corruption through letting go. But my family is wealthy. Why don't I return to the lower life, enjoy wealth, and make merit? Just then the Buddha read Soul's mind. And as a strong man might bend or stretch his arm, the Buddha disappeared from the vulture peak and appeared in Cool Grove. Soon afterwards, as the Buddha and a number of monks were walking about the dwellings, they came to Sword's walking path. The Buddha looked at it and asked the monks, whose walking path is this? It's covered in blood like a slaughterhouse. They told him what had happened. ओके, सो हम याद रखें कि किस तरह से ये स्टोरी बिल्डअप हो रही है, क्योंकि जो टीचिंग आएगी दैट विल हैव ऑल दिस बैकग्राउंड। सो ही इज़ वेरी डेलिकेट, है ना। और फिर उसमें बताया कि वो बहुत एनर्जेटिकली वॉकिंग करते हैं, जिससे कि उनको खून निकल आता है। सो नाउ वील हैव द टीचिंग। अतिको भगवा येनायस्मतो सोणस्य विहारो तेन उपसङ्कमित्वा पञ्यत्ते आसने निषीदि आयस्मापि को सोणो भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निस्सिन्नं को आयस्मन्तं सोणं भगवा एतद्वोच ननु ते सोणरहो गतस्य पटिसल्लीनस्य एवं चेतसो परिवृत्तकोदपादि ये को केचि भगवतो सावका आरध्य वीर्या विहरन्ति अहं तेषं अन्यतरो अथ चापन्मे नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुञ्चति सविजन्ति खोपन्मे कुले भोगा सक्का भोगे च भुञ्जिन्तुं पुण्यानि च कातुं यन्नुनाहं हीना यावतीत्वा भोगे च भुञ्जेयं पुण्यानि च करयन्ति एवं भन्तेति तं किंयसि सोण कुशलो त्वं पुब्बे अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरेति एवं भन्तेति when तं किं मयसि सोण यदा ते वीणाय तन्त्यो अच्छायता हुन्ति अपि नु ते वीणा तस्मिन् समये सर्वती वा होति कमय्या वाति नो हे तं भन्तेति तं किं मयसि सोण यदा ते वीणाय तन्त्यो अतिशिथिला होन्ति अपि नु ते वीणा तस्मिन् समये सर्वती वा होति कमय्या वाति नो हेतं भन्तेति तं किं मयसि सोण यदा ते वीणाय तन्त्यो नेव अच्छायता होन्ति नाथि शिथिला समे गुणे प्रतिष्ठिता
अभिनुते वीरा तस्मिन् समये सर्वती वा होती कमय्या वाति एवं भन्तेति एवमेव कोशोण अच्छारद्धवीर्यं उदच्चाय संवत्तति अतिलीनवीर्यं कोशज्जाय संवत्तति तस्माति हि त्वं शोणवीर्यसमतं अदिष्ठः इन्द्रियाणं च समतं पटिविज्य तत् च निमित्तं गणहाहीति एवं भन्तेति को आयस्मा सोणो भगवतो पच्चसोऽसि अथ को भगवा आयसमन्तं सोणं इमिना ओवादेन ओवधित्वा स यथापि नाम बलवा पुरुषो सम्मीजितं वा वाहं असारेय असारितं वा वाहं समिञ्जयेय एवमेव शीतवने आयस्मतो सोळस्य सम्मुखे अन्तर्हितो गिज्झकूटे पवते पातुर्होषि Okay, अथ okay, good enough. I think we read this. We have to read from the Buddha then went up. Yeah. The Buddha then went up to Soan's dwelling and sat down on the prepared Soan's dwelling and sat down on the prepared seat. Soan bowed and sat down. And the Buddha said to him, Soan, while reflecting in private, didn't you think I'm one of the Buddha's energetic disciples, yet my mind is freed from corruptions through letting go. But my family is wealthy. Why don't I return to the lower life, enjoy wealth, and make merit? Yes, sir. Well, let me ask you, Soan, when you were previously a householder, weren't you a skilled lute player? Yes. When the strings were too tight, was the lute melodious and easy to play? No. When the strings were too loose, was the lute melodious and easy to play? No. But when the strings were neither too tight nor too loose, but set to a balanced tension, was the lute then melodious and easy to play? Yes. Just so, Son, too much energy leads to restlessness and too little to laziness. So apply a balanced energy and bring about an evenness in the spiritual faculties. And that is where you should take up the meditation object. Yes, sir. Then, as a strong man might bend or stretch his arm, the Buddha disappeared from the presence of Son in cool grove and appeared on the vulture peak. तो दैट्स द प्रिंसिपल टीचिंग, है ना। मे बी हम ऐसा कर सकते हैं निखिल, हम एक छोटा पैराग्राफ और उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद वी कैन मे बी हैव अ लिटिल डिस्कशन, क्योंकि उसके बाद का जो प्रसंग है वो और फैक्टर्स में चला जाता है। अथ को आयस्मा सोणो अपरेण समयेन वीर्यसमतं अधिष्ठासि इन्द्रियाणं च समतं पटिविद्धि तत् च निमित्तं अगहेसि अथ को आयस्मा सोणो एको भूपकट्टो अपमत्तो आतापि पहितत्तो विहरन्तो न चिरसेव यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्यजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्यपर्योसानन्दिथेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पद्य विहासि खीना जाति मुसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं नापरं इत्थतायाति अभिज्ञासि अन्यतरो चापनायस्मा सोणो अर्हतं अहोसि। ओके ओके निखिल, बस अब बदल जाएगा इसके बाद।
tool, Son applied a balanced energy and brought about an evenness in his spiritual faculties, which is where he took up his meditation object. He then stayed by himself, secluded, heedful, energetic, and diligent. In no long time in this very life, he realized with his own insight the supreme goal of the spiritual life, for which gentlemen rightly go forth into homelessness. He understood that birth had come to an end, that the spiritual life had been fulfilled, that the job had been done, and there was no further state of existence. And vulnerable soul became one of the perfected ones. Okay, so I thought it's useful to maybe pick ये वाली जो कहानी है, क्योंकि आपने कई बार टीचर्स को सुना होगा यही ये जो ल्यूट वीणा वाला एग्जाम्पल देते हुए कि हमें एफर्ट सही बैलेंस में लगाना है और सही दिशा में लगाना है, वरना दिक्कत हो जाती है. एंड इट कम्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम मेनी टीचर्स, सो आई थॉट इट्स यूजफुल टू सी द ओरिजिन स्टोरी. So we can consider the many factors here and see if it triggers anything in our own minds. अब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ज़्यादा कसना नहीं हो, ये भी कह रहे कि ज़्यादा हमें ढीला नहीं रखना है. So in our monasteries we are often warned कि इस कहानी को हम अपने संखारों की दिशा में भी ना पढ़ें. So for instance, अगर मेरे संखार ऐसे हैं कि अरे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कसना है, then I should be careful. On the other hand, अगर मेरे सोण जैसे संखार हैं कि खूब जोर लगा रहे हैं, then I should relax. So I think most of us के लिए तो यही होता होगा कि रिलैक्स वाला ज़्यादा होगा. I'm not sure. very funny. I mean, at I least had for me. I was having a conversation with a very accomplished teacher, and he was saying कि ये कभी-कभी it also depends on कैसे कहें इसको हम, little bit like an ethnicity. So for example, जो वेस्टर्नर्स हैं उसमें ये भाव बहुत है जोर लगाने का, है ना, एंड सेंस ऑफ सेल्फ. इसीलिए यू विल सी मेनी वेस्टर्न टीचर्स टीचिंग इन दैट सेंस के कुछ नहीं करना है, कोई नहीं है, वगैरह वगैरह. और अगर हमारी और ज़्यादातर प्रवृत्ति ढीलेपन की है, तो वी शुड बी केयरफुल कि हम जो वेस्टर्न टीचर्स की टीचिंग्स हैं उसको सही तरीके से सुने, वरना हम तो फिसल जाएंगे. अगर हमारी by and large pravritti is to be easeful and self confident and so forth. So I thought that was quite useful to hear. And it's true, a lot of Western teachers do teach in that way ना, कई बार हमने discuss किया है. To what extent that applies to us, we have to be super careful. एंड दूसरा बेनिफिट ये हो रहा है बंदे जी की, ये मतलब त्रिपिटक में ये कथा कहाँ आती है ये पता चल रहा है, क्योंकि ये वीणा वाली कथा को सुना तो पहले भी है, बट डिफरेंट उसमें मैंने अलग अलग जगह कुछ अलग अलग पढ़ा था कि जब भगवान बुद्ध एक समय बहुत ज्यादा पांच पच वर्गीय भिक्षुओं से अलग होकर तपस्या कर रहे थे और वो सफल नहीं, मतलब उनके साथ तपस्या कर रहे थे तो पास से स्त्रियां गाती हुई निकली, ऐसा करके, या कुछ अलग अलग कंटेक्स्ट में सुना था. तो बट अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि त्रिपिटक में सोण कोली विश्व के संदर्भ में ये कथा है, ना कि भगवान बुद्ध की तपस्या के संदर्भ में. सो ये मेरे को एक बेनिफिट हो रहा है. कुछ टीचर से मैंने ये भी सुना है कि वो ऐसे भी हमें बताते हैं कि अगर मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है कि मुझे वीणा की तारों को कितना कसना है, सी दे गिव दैट एग्जांपल ना कि भाई जो वीणा सीखता है वो वीणा उठा के खुद ही नहीं शुरू हो जाता है. ही इज लर्निंग विद समबडी हु नोज, और शुरू में वो उनको ट्यूनिंग सिखाता है कि भैया देखो इतना करो. और सो दैट ऑल्सो टेक्स टाइम. सो आई हैव हर्ड टीचर्स ऑल्सो एक्सप्लेन दैट वे कि सही एफर्ट कितना और क्या है. समटाइम्स इट टेक्स टाइम फॉर मी टू कम टू द पॉइंट जब मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि अच्छा यार मेरे लिए इतना सही है. So there is also that factor which is not coming here,
I mean, here, of course, I mean, remember, he's got the Buddha sitting in front of him, so we should also not have that misconception, because we're not living in that time. So, मैं एक सबमिशन था मेरा बंते जी कि वो जो ये जो एग्जांपल है वीणा की, तार कसने की जो बात है और वीणा के बजने की बात है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी ए प्लेयर। अब उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है ना, तो होता क्या है कि बेसिक्स के बारे में तो मालूम होना चाहिए। वो तार जो कसने का जो एक तरीका है और वो किस तरह से वो कसी जाएगी और कौन सा उस पे से नोट निकलेगा, वो जब तक उसकी समझ ही नहीं होगी तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। फॉर अ पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ल्यूट, या वो क्या तार क्या होता है या सुर क्या होता है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वो तो चाहे ढीला है चाहे कसा हुआ है कुछ भी है। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि एक संस्कार जो मतलब समथिंग इनहेरेंट हैज टू बी देयर, वो जो गुण है इस बात का कि वो समझ, उस समझ का जो गुण है वो परहैप्स सब में नहीं होता। वो देयर आर selected people who have this and becoming because of their own past lives. So ये it cannot be applied to everybody. That's my yeah, submission is that. you could see it that way, or you could see it. I just gave the example ना, अभी जो मैं छोटी सी कमेंट्री दे रहा था उसमें मैंने यही शेयर किया ना, कि कुछ टीचर्स इसको ऐसे बताते हैं कि भाई जो म्यूजिक सीखते हैं, जैसे आप भी सीखे होंगे, यू वुड हैव लर्नड इट विद समबडी, है ना, who is slowly able to coach whatever in sur, etc., or for example in how much to tighten, how to tighten, and then you do it for some time. So for you to become daksh at it, it takes some time, and more importantly, it takes the presence of another person जिसको पता है कि भैया इतना कसना होता है, and so forth, है ना. So so that's how it has been explained. Not necessarily कि कुछ inherent है. I mean, yeah, sure, उसकी तो अपनी भूमिका जो है सो है ही, but in the here and now इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई कितना एफर्ट सही है, किस दिशा का एफर्ट सही है. यहाँ एक और चीज कही गई, he picked up his meditation object. Now how do you pick up the correct meditation object at what point, for example? That's also an issue, है ना. सो इन ऑल ऑफ दैट, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो ये बताते हैं, लाइक आई शेयर्ड, कि to get to that point also you need some help, guidance, coaching, teaching, whatever you want to call it. So that is pre-assumed. इस स्टोरी में it pre-assumes कि भैया वो सब भूमिका तो है, and then how much do you tighten and loosen it, then he's coming there. So many times teaching में ये दिक्कत होती है that it pre-assumes many things. तो हमारे में उतनी we have to have that sharpness. ओहो, जब ये टीच कर रहे हैं तो इसके पीछे ये बैकग्राउंड assumed है. So if I realize that I don't have that background, then maybe I need to first, put it together. एक और quite interesting. I do see a lot of people, क्या होता है कि जैसे आप एक ग्रुप में बैठे हैं और आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एवरीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हो सकता है उसमें से एक आदमी भी आपके साथ ना हो, तो आप चुप हो जाते हैं। फिर इसी तरह से हर एक चीज में, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, घर के अंदर ही मान लीजिए हम बैठे हैं, मियाँ बीवी हैं दोनों, मैं बैठा हुआ, मेरी वाइफ को बिल्कुल उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट इज दिस? या दूसरे किस, हमारे इतने हमारे रिश्तेदार हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो कहने का मतलब, मैं ये जो कहना चाह रहा था वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई बीज होना चाहिए जिसकी वजह से आगे फलीभूत होगा। वो बीज ही नहीं है तो वो उसको आप डेवलप ही नहीं कर सकते कम वक्त में। Yeah, I mean, maybe, but Rajendraji, here the point is slightly different, ना? Here the point is about oneself. यहाँ तो वो बात हो रही है, यहाँ प्रचार की बात नहीं हो रही. This is not discussion on, this is not a teaching on pedagogy कि हम कैसे टीचिंग किसी को बताएं. वो और जगहों पे वो प्रसंग आते हैं और उसके अलग उदाहरण हैं. यहाँ तो टीचिंग ये है कि भाई मैं अपने लिए, जो वेनरेबल सोन अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट बैलेंस नहीं है ना. ये मुद्दा है ना यहाँ पे. तो ठीक ठीक तो ठीक। यहाँ मुझे ये देखना है कि भाई मेरा एफर्ट है नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है. मुझे पता भी है कि एफर्ट
किस दिशा में करना है, यहाँ शायद that's that's the that's where we should give our attention. ठीक। सो मैं ड्यूरिंग मेडिटेशन एक्चुअली मेरे को बहुत कश्मकश में थोड़ा एक सबमिशन या कह लीजिए जो भी मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड इट वाज रिलेटेड टू एफर्ट ओनली। तो समहाउ आई वाज मतलब हमेशा ही मेरे दिमाग में रहता है कि मैं जो एफर्ट है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, मतलब कि कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये डिससेटिस्फैक्शन के लेवल में रहती हूँ कि मेरा ये जो एफर्ट है वो या तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ परफेक्ट हो, और परफेक्ट नहीं होता है तो फिर इसलिए मैं करती नहीं हूँ काफी हद तक। मतलब बहुत समय तक मैंने ये ऐसा दिमाग में रखा कि इसको परफेक्टली किया जाए, लेकिन वो होता नहीं है। बट देन आई रिमेम्बर वन, पहले जब बहुत पहले की बात है कि मुझे कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स दी जाती थी, मैं धम्म से रिलेटेड कुछ काम करती थी थोड़ा बहुत। तो उसमें सिंपल मुझे सिर्फ सेग्रीगेट करना था कि कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स को मतलब कुछ ऑडियोज को लिख करके आपको देना था, तो बस इतना ही छोटा काम था। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि मैं ठीक से काम नहीं करती, तो आई जस्ट रिमेम्बर टुडे। तो मुझे लगा कि मैं उस वक्त तो काम कर रही थी चाहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं कह रही थी, मतलब मैं उसको बहुत ठीक से शब्दों में भी नहीं बोल सकती थी और ठीक से, लेकिन मेरे दिमाग में या कहीं पे somehow it got registered about difference between dhamma, dhamm in small letters and capital letter. So छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप चाहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम पे शायद आप कर रहे हो, but still you are working. So I was just thinking why I've stopped that. I mean, और कुछ time period से तो I was reflecting कि I must start doing again. So then मतलब एफर्ट, मेरे मेरे जो मतलब मैंने अपने जीवन में जो देखा वो ये कि आप एफर्ट करते रहे, शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे, लेकिन समहाउ इट रजिस्टर्ड इन योर माइंड की सम डिस्टिंक्शन, और कुछ भी मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, बट द फियर यू हैव फॉर द सब्जेक्ट विल मेक, मतलब वो ज्यादा हैम्पर क्रिएट करता है रादर देन आपका जो आपकी समझ है वो आपकी समझ को एक स्टॉप कर देता है। तो देन effort is a most essential thing. If you stop doing, but you have to find out कि किस किस कारण से आपके एफर्ट रुक रहे हैं, आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना एफर्ट हो रहा है। तो I mean that's what I was today reflecting, so I just wanted to share this कि अब ये नहीं है कि अब मुझे नहीं मालूम कि मैं इसके लिए शायद क्योंकि मैंने अभी भंते जी ने अभी पीछे बुक के लिए बोला, तो आई डिडंट आस्क सर टू फॉर बुक, बट मेरे दिमाग में था कि वेदर आई विल बी एबल टू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी उस बुक को जस्टिफाई। तो somehow there is a मैंने एक अपने आसपास ये लगा लिया कि this is how one should do. So then there is a fear, so then that fear needs to that needs to overcome, I think so. That's जो मेरे को समझ में आया, and that is you are dealing with you only not somebody else. So हाँ, definitely dhamma helps you a lot, people helps you a lot, but ultimately it is your journey to कितना वीणा को कसना है, कितना खोलना है। तो that is what I felt. And Poonam, I think you and I have a history of a debate on exactly this point, है ना? So जैसे मैं सुनता हूँ जब आप कहती हैं कि अल्टीमेटली इट इज योर जर्नी के वीणा को कितना कसना है, कितना ढीला करना है, इन वन सेंस इट्स ट्रू, बट जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन्ड, जो हमारे टीचर्स है वो हमें ऐसे बताते हैं कि या यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ तुक्के मार मार के सीखना, यू कैन डू दैट। या जैसे वो एक एग्जाम्पल था कि यू कैन इंसिस्ट ऑन स्टिकिंग योर फिंगर्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट, कि मैं खुद ही उसको करके देखूंगे या देखूंगी, और द वाइज पर्सन कैन ऑल्सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स।
सो नाउ आई डोंट नो एग्जैक्टली आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है कहने का, बट ऑफन जब मैं आपसे सुनता हूँ तो कभी मुझे दिस दिस थिंग इज ट्रिगर्ड इन माई माइंड. And so I'd just like to offer once more, and I've said it maybe many, many, many times, कि कम से कम मैंने जैसे सीखा है, अगर मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ जो पूरे जीवन या मेरे से कई ज़्यादा समय से कस रहा है, ढीला कर रहा है, कस रहा है, ढीला कर रहा है, तो एंड इफ आई गो एंड स्पीक विद हिम और हर और एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद दैट पर्सन, तो शायद मेरा कसना और ढीले करने की जो जर्नी है इट कैन बिकम शॉर्टर, सिंपलर. So I think there is that fine point here, and maybe you already imply that, but when I hear you sometimes it seems के मैं खुद ही उसको करती रहूंगी, and which नहीं, is also fine. There are people like that. That's also okay. That's our I, choice. या इट्स लाइक जब आपके पास कुछ नहीं होता, मैं वो जो रिफ्लेक्शन था वो मतलब मैं कहूंगी कि मतलब there was no one to guide you at that point of time, but still you need to make effort. I mean, that point of time जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, I was staying alone in Gurgaon. There was no one, but somehow I just मेरे दिमाग में ये थॉट आया और मेरे को उस तरह से चीजें भी मिली. फिर then I came into contact with someone. इनफैक्ट टंडन जी आई केम इन टू कॉन्टैक्ट विद. सो उन्होंने मुझे कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स दिया. तो इस तरह से मतलब ये नहीं कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आई दिस इज माय मे बी सेकेंड बर्थ कि आई हैव सर एंड यू. सो जहाँ पर मैं बहुत क्लोजली आई कैन इंटरेक्ट एंड यू नो समझने का भी प्रयास कर सकती हूँ. तो लेकिन हर जगह हर वक्त वो चीजें नहीं होती और हर वक्त ये भी चीज नहीं होती. सो दैट इज व्हाट आई मीन आई फेल्ट एंड आई टोटली एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग टुडे. आई मीन कि आपको जरूर हेल्प की जरूरत होती है, हमेशा जरूरत होती है, लेकिन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ये भी एक फैक्ट है. Yeah, thank you for saying that second birth वाला. वो मेरे को भी लगता है. Sometimes you are so confused and totally, like given up, and then you think, okay, now this is my new birth, and let's move forward. Thank you. Thank you. I would also like to say one thing कि uh, मतलब बद्री जी ऐसा भी आई फील होता है ना कि हम अभी स्ट्रिंग्स टाइट और स्ट्रिंग्स लूज करने की बात करें, बट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो बी दैट मेरे को कुछ एरियाज ऑफ माय माइंड या फिर कुछ एरियाज ऑफ माय लाइफ में स्ट्रिंग टाइटन करनी है और कुछ एरियाज ऑफ माय लाइफ में स्ट्रिंग लूज करनी है. एंड दम दम धम्म प्रैक्टिस रिलेटेड भी हो सकता है ना, क्योंकि आज भी मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ था मेडिटेट करते हुए थोड़ा सा. Yeah, it's very true. और इस पे अगर आप देखो ना इन दिस स्टोरी, जैसी मेरी समझ है, that the technical factor that is जो सोन में एक्स्ट्रा है, that is the factor of energy. And so I'm assuming that the story assumes कि जो बाकी factors हैं they are reasonably in balance. Huh. But then he's sown, you see, he's got the Buddha as a teacher and we don't. So clearly for us many other factors may also need to be brought into balance, or या ऐसे कुछ factors हो सकते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हैं भी, and we need to cultivate them. So the story is more like an indicative story of keeping balance. Um, so yeah, you're totally right. We may not even know what are the boxes to be ticked. We know some boxes and maybe we're not ticking them well. That's problem number one. Problem number two would be that there are many other things. Darsab, in terms of number of factors, is that, I mean, this is just my, I'm just deducing this, or am I over deducing?
Dhar sir, are you able to listen? You are on mute, sir. And that's very true, of course. In the 5 faculties, we are asked to balance virya with samadhi and shraddha with panya. That is the technical, kind of standard description given for balancing the faculties, because all of us have those faculties. These 5 faculties are something which all of us possess in different measures, and they need to be properly balanced. In some traditions, there's emphasis on samadhi and panya, and saddha is given up. And then the people feel very dried up, and in others, the only devotion is there, panya is not there, then they get carried away. So balancing is there necessary. Similarly, in our day-to-day life, for example, Saksham needs to balance his football. He broke his head twice, he broke his hand twice playing football. So better now stop playing that. Am I right, Saksham? You take some other game. Or let's see. Just a lighter tone. Similarly, all of us have different habits. Somebody has the habit of eating too small, somebody has the habit of eating too much. That also needs to be balanced in many cases. People get into that kind of situation. Similarly, with respect to as worldly people, with respect to various habits, we can go into extremes, extremes of music, extremes of enjoyment, or extremes of asceticism, extremes of food. What kind of food should be given? We know how much, because I know it personally, having done that for a long time. So maintaining a balance is certainly very important. And sir, what about maintaining balance of factors like Priti, Prashanti, Upekha, and even Metta? Those are seen to be factors of enlightenment. So they are allowed to be developed to whatever extent you can. Okay. There's no, for example, sati, develop as much as you can. Dhammavichaya, you develop as much as you can, no problem. Okay. But it's not like for example, I've heard we should be careful when developing too much metta and not balancing it out with upekha. No, that is true. Because that leads to attachment. That is true of the 4 Brahma Viharas. We think that they are separate, they are not. That is the point. They are all together. Okay. So upekha is all pervading. So it's not a question of balance. It has to pervade all of them. So upekha has to pervade into metta, into karuna, into mudita. And it's not that we need certain amount of upekha and certain amount of metta. No. Metta has to be present all the time. Okay. That's it. Thank you. The issue of effort, I think, I don't remember किसी ने अभी कहा ना, and it's true कि जो 37 विंग्स ऑफ अवेकनिंग है बोधिपक्य धम्म है, उसमें आपको याद होगा एक बार 2021 के वास में धर साहब ने वो हमें एक एनालिसिस दिया था कि एक्चुअली जो एनर्जी, जो वीर्य का फैक्टर है, एफर्ट का जो फैक्टर है, वो सबसे ज़्यादा आता है. सो मे बी दैट इज़ एन इशारा टूवर्ड्स दिस कि in some senses effort is a primary principal condition for us to make any progress on the path. So Especially for us, the Indians,
because हाँ खैर साहब, वो है Indians are known पैरालिसिस for बता chalta दीजिए। hai. Indians are known for chalta hai attitude. No, we have that notion of ठीक है चल रहा है. That's okay. So we need to really put in effort. तो सर मेरा एक सवाल ये है कि जब हम एफर्ट करते हैं इन द सेंस कि व्हेन वी डू थिंग देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना एफर्ट मेरे को जरूरी था, या फिर जैसे अभी बंटी जी ने बोला कि यू नीड टू हैव सम गाइडेंस। तो मैं अगर सपोज मैं इनकॉर्पोरेट करना चाह रही हूँ गाइडेंस को, तो मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगी गाइडेंस को? जब मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं जितना समझी थी वो ये कि जब आप काम कर रहे हो तब आपको पता चलता है ओहो आपने ये वाली चीज आपने शायद ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इस तरह से इन्वॉल्व हुए और इस तरह से नहीं हुए, तो देन हाउ डू यू डू दैट? हाउ हाउ एन Yes. improvisation of effort can be done? If we are mindful, सती संपजन्य अगर हमारे साथ लगी रहे तो then अपने आप हो जाएगा. If we are about the effort in the direction of worldly activities, what is being said is that when you want to put effort in the spiritual dimension, then probably because in the worldly activities the impact is easily visible. In the spiritual dimension, the impact is less easy to discern unless you have sharp धम्म विचय की फैकल्टी बहुत स्ट्रांग हो तो पता चल जाता है. अगर ना हो, स्ट्रांग ना हो तो पता नहीं चलता. ये दिक्कत हो जाती है. Because we tend to take things, especially in our country, we tend to take things कि ठीक है कर तो रहा हूँ, काफी है, कुछ कर रहा हूँ. बिकॉज वी लुक एट अराउंड, यार हमारे आसपास कोई कुछ करता ही नहीं, हम कम से कम सुबह 5:30 से 7 बैठ तो रहे हैं. तो we feel happy and that's very good to feel happy about it. But we tend to don't see कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ उस पीरियड में या नहीं है, उस पीरियड में मैं रिलैक्स ही कर रहा हूँ. So in those dimensions, some feedback is needed. But in my own work, for example, in my balancing my work and my family life and things of that kind, that obviously will happen if I have my ability to introspect. Periodically, I can introspect properly. Otherwise, मैं देखता हूँ अपने बच्चों में, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, children are, exerting so much effort in their career कि फैमिली की ऐसी वैसी हो रही है. The balance is not done. So similarly, in terms of other activities, in terms of work, you're so involved, you're not taking care of your health, you're not taking care of family, or other way around. You neglect work and you get involved in health business so much, then again that balance has to be done. So this is obviously, these are the things which one has to do oneself by being mindful of what is going on within my mind, what is going on within my body. So sati sampajanya and sati panya, these are the kind of faculties which we can use in every domain. तो जितना वो डेवलप होंगी उतना हमारा बैलेंस बना रहेगा. सो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि जैसे अगर ये तो सर ये बात होगी, जैसे मैंने जो काम अजत बहिद जैसे मैं वैसे देखती हूँ कि जो अंदर जैसे मैं आप जितना काम अपने पर कर रहे हो वो आपका बाहर भी दिखने लगेगा, और जब कल नहीं काम कर रहे हो तो बाहर नहीं दिखता है, वो काम भी नहीं दिखता है उस तरह से. योर कंडक्ट विल चेंज. सो is that a right way? But then again, when you are talking about spiritual thing, तभी देन क्योंकि वो बहुत ही वे मतलब क्या कहना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, और हमारे को मालूम भी नहीं है एक्चुअली. तो तब मतलब तब क्या कर? I can give you example. I knew of one friend long back, very good meditator, very senior meditator, and he would go for a long course, come back. After 3 months, he'll again come, sir, जरा recommend कर दो एक और long course में जाना. तो मैं शुरू में करता रहता था. ठीक है, अच्छा है, जा रहा है, अच्छी बात है, ध्यान कर रहा है, अच्छी बात है, ध्यान कर रहा है. Then when it went on for a few years, I asked him, यार क्या प्रॉब्लम है, तुम घर पे टिकते क्यों नहीं हो?
सर वो पत्नी मेरी, उसकी तबीयत खराब है तो वो चिक 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 करती रहती है। अच्छी खासा ध्यान करके आता हूँ, मन बड़ा शांत होता है, और एक महीने 1 महीने 1.5 महीने में उसकी चिक चिक से हमेशा पोस्ट करती रहती है, जाते रहते हो घर, मेरा ख्याल नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सो मैं चला जाता हूँ फिर, यार ये तो गड़बड़ है ना, यू आर नॉट बैलेंसिंग योर होम लाइफ विद योर मेडिटेशन। I mean, what is the use of meditation if you're not able to take care of your wife and you can't handle her views, and if she is complaining, maybe there is a genuine truth in that. If you're away every 3 months, you go away for a month, obviously there will be complaint. So फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया उसको रिकमेंड करना कि भाई जाने के लिए। तो obviously that needs, in his view it is very good, he is going for meditation, yeah, wonderful, but that is hurting his, and he is doing it out of aversion actually. तो शुरू में तो मुझे पता नहीं चला, जब मैंने बात की और पूछा तब पता चला कि ये हो रहा है। So that's the kind of simple, I'm giving very simple example where people can get easily carried away. बैलेंस नहीं हो रहा। So it's a delusion which stops you. That's what I can say, कि आपको एक चीज के प्रति, चाहे वो अच्छी चीज हो, मतलब एक अच्छी आदत है, delusion, that's वो बैलेंस की बात है ना, कि रीजन इज delusion is always there, that is understood. For all of us we have delusion of various kind, various levels. The issue is that यहाँ पे हम डिस्कस करें बैलेंसिंग के बारे में कि हाँ, अगर मुझ में क्षमता है अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की, अपनी मनस्थिति को देख पाने की, तो मुझे पता चल जाएगा यार मैं यहाँ से भाग रहा हूँ इसलिए बहाना है कि वो बहुत अच्छी चीज, उसको मैंने इतना महत्व दे दिया, वो बहुत अच्छा है, ये भूल गया कि यहाँ पे भी ध्यान हो सकता है, ये परिस्थिति को सैंपल करना भी इज ए रियल धम्मा. So this kind of problems become very difficult for a person to see himself. correct. That is the point. Then that is where Bhante ji is saying that some guidance is needed. Somebody else somebody else who can objectively see, ask you questions and make you investigate and tell you कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है. ठीक है सर. So maybe because we only have a few minutes, would you like to offer some commentary कि जब हम टीचर्स को सुनते हैं, स्पेशली वेस्टर्न टीचर्स को सुनते हैं, या जैसे कि हमारे में बहुत प्रसिद्ध है ना, अयान सुमेधो की सो एंड सो किताब पढ़ रहे हैं, उसको कैसे सुने और कैसे पढ़ें? मे बी यू कैन ऑफर समथिंग देयर, बिकॉज फॉर मेनी ऑफ अस द वेस्टर्न टीचर्स आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ धम्मा इंस्ट्रक्शन, है ना, लेकिन उसको अपने, जैसे आपने कहा, हमारी जो पर्टिकुलर कंडीशनिंग है उसके कॉन्टेक्स्ट में सुनना, मे बी दैट विल बी अ यूजफुल sort of tool to be available to us, given the fact that we've just discussed this. आप अगर अजान सुमेधो के टॉक सुने, खासतौर पर पुरानी टॉक सुनेंगे, तो उसमें वो कई बार you can make out, from the discuss, from the talk being given, that the people in front are those who are feeling low because of the cultural conditioning of the place. Some kind of cultural conditioning, some kind of religious conditioning. जो Christianity में एक concept है sin का, and there is a concept of a sinner. And the belief is that we are all sinners and we should therefore dedicate ourselves to the Lord so that He can deliver us from the suffering. So there's a devotion is a primary thing there. And I mean, apparently, I would say, devotion is apparently the primary thing. And then एक शीलवान जीवन जीना, living, generosity is a very important thing. So all the good qualities which we generally talk of, which have a relationship with the world, they are recommended. Generosity is very much
love, kindness, and all those are very highly praised as very good qualities. Perfectly fine. Now, many young people over the years there have developed this consideration that we are not so good as to love others. There's that famous saying, love your neighbor as you love yourself. And they feel that humse to hota nahi hai. And therefore there is a kind of feeling of inferiority complex aa jati hai. Majority of the thinking people, not obviously all, majority of the people who are reflective, they get that feeling that, yeah, our teaching is right. We are all sinners because we are not able to live up to our value system. जिस तरह से वो एक फेमस उनका डिस्कोर्स है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था, वो एक नन के बारे में आपने शायद सुना हो, किसी ने डिस्कोर्स है कि उनकी नन की जो बेटी थी उसको बहुत सेक्सुअली अब्यूज किया गया एंड शी वाज किल्ड एंड शी यूज्ड टू टेल एंड द as a minister in the church we should forgive everybody who's done harm to you, and she was not able to forgive herself and forgive the person who has done that to her daughter, and she got so much guilt ridden that she gave up the ministership and returned to the usual lay life without. And that probably must have been a big news in UK. And then Ajahn Sumedho comments, see, this is the problem. If somebody had directed her to me, I would have explained to her. There was no need to give up her job or give up her noble duty. She was doing such a noble thing, advising people to forgive, and this. And if she's not able to forgive, then she should forgive herself. So that kind of a switch he was mentioning. So the point which I was trying to say is that those teachings are being given in a milieu where the notion of the understanding is of a particular kind, and the general feeling, not all, but general of the people who come there for practice have this understanding of an inferiority complex. We are not able to truly live up to our own values, which is true of India also, of course. But we have a notion that we are all, you may say, हमें तो मालूम ही नहीं है ना, but that is there in the air. It is a part of our genetic code that we are all children of immortality, and there is a feeling of goodness and God is within us. We don't think of ourselves as sinners. We think of God is within us and we have to find it out. No, I'm talking of general masses in the country. So the perception is therefore that God will take care of us, of course. We need to do something and try to live. And if you are not able to live, you hand over your deficiencies also to the God. He will take care of that. We may not have that perception as followers of the Buddha, but majority of the other people have that perception, and that carries off in our mind, and we don't have really much to do other than just surrender and things will take care. So in that view, therefore, the teaching has to be for them of one kind and for us of other kind. For us, therefore, teaching has to be, come on, apply effort. For them, teaching has to be, relax. Learn to see the things. Learn to practice metta towards yourself. For us, teaching should be put in effort so that we raise purify our minds, and then the practice of whatever we are not able to achieve, we'll be able to achieve. That we know we all know, whether India, East or West, we know what is good. These are the good qualities which all should imbibe. We are not able to live up to them, and we think, oh, it's all right, we'll surrender and God will take care of us. Or करते रहेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, हो जाएगा. We don't get overtly concerned about them. There, the concept is we are deficient in some way, so we should apply more effort. And in that applying effort, the imbalance happens, and therefore the kind of things which about Venerable Sona is mentioned. The effort is being done so much
that one gets restless and eager and becomes depressed. So considering the kind of cultural background and the general worldview in the society, we need to have a different approach to listen to the teaching and see it in that proper context. So the teaching which is geared towards those people who are suffering from inferiority complex has to be different from teaching given to those who have some kind of superior. I mean, it's not exactly superiority complex, but who have no inferiority complex whatsoever. So the teaching has to be differently interpreted. Accordingly, we have to see that when somebody says there is no need to apply too much effort, it essentially means the effort should come out of sati and panya, not out of your own sense of self. So that the balance takes place naturally. For those who are applying too much effort, it means the effort is reduced. For those who are not applying effort, for them effort is increased. So we, in our understanding, in our opinion, and generally agreed upon, that in the Oriental countries' traditions, the tendency is to be relaxed. And therefore, we need to apply more effort. So we need to interpret and see the teachings in their proper spirit. I hope that is okay, Pinteji. If any correction is needed, you can do that. Yeah, very good, Darshan. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you everyone for asking those questions. क्लोजिंग के लिए भंते जी से निवेदन करता हूँ. Okay, so maybe all be able to develop the necessary qualities and be able to apply ourselves in whatever direction is suitable for our situation. Bhavatu Sabbamangalam Rakkhantu Sabbadevata Sabbabudhanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Bhavatu Sabbamangalam Rakkhantu Sabbadevata Sabbadhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Bhavatu Sabbamangalam Rakkhantu Sabbadevata Sabbasanghanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Arahang Samma Sambuddho Bhagavaditang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savakta Sangho Sangham Namami. Three pranams to Bhante ji also. Pranam. 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 धन्यवाद. आप सभी का संडे शुभ हो. Thank you. धन्यवाद. Namaskar.